Hello? Hello? Okay, I think we're on. So we'll get started. Can you guys see me? Oh, great. And how is the volume? Can you hear me? Okay, great. Let's get started. Hey all, welcome to Treck. This is Raj here. Welcome to the live stream. Today I will summarize all the information from the 8-part mini-series on HIV. And I'll have a question and answer session at the end if we have audience. Every segment will be first in English and then in Hindi. I will aim to keep it brief, targeting 15 to 20 minutes for the summary. And after that, we'll have a question and answer session. If there are no questions, we'll just end the live stream and I'll go back to bed. So with that said, let's get started with some housekeeping rules. Please do not share your personal information. And YouTube has got strict policies around age-specific content. So this channel and the videos in this channel are considered to be general, which means even kids can see. So please do not talk about symptoms or any explicit things in your chat. And please wait till the end of my monologue before asking questions. I can't see even super chat or anything while I'm delivering a monologue because I'm looking at the camera and not facing the computer screen. Also, let me remind you, I'm not a doctor. I'm just an investor who has taken extra interest to get all this information for you. And I will limit my answers to what I can back up with reliable sources. I'll answer all questions, but please limit your questions so that I can answer all the questions in detail. This means please listen carefully and do not ask the same question twice. I'll answer all questions first in English and then in Hindi. साथियों, आज का लाइव सेशन जो है इसमें थोड़ी रूल्स हमें जाननी चाहिए. मैं 15 से 20 मिनट के अंदर पूरी सारांश बता दूंगा 8 एपिसोड्स की. और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा जहां आप सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको जवाब दूंगा. और पहली बात यह है कि आप कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर नहीं कीजिए क्योंकि YouTube पब्लिक फोरम में आपको तकलीफ़ हो सकती है. और YouTube की पॉलिसीज़ काफ़ी सख्त है. ये जो चैनल है इसमें जो भी वीडियोस है कोई भी देख सकता है, बच्चे भी देख सकते हैं. इसलिए जब आप चैट में कुछ लिखोगे उसमें सिम्टम्स के बारे में नहीं लिखना, कोई एक्सप्लिसिट चीज़ें नहीं लिखना, सिर्फ सवाल पूछना जो सभी लोग देख सके. और जब तक ये वीडियो का मेरी जो मोनोलॉग है ये ख़त्म ना हो जाए तभी तक आप सवाल नहीं पूछना क्योंकि मैं कोई भी चैट या सुपर चैट नहीं देख सकता जब मैं आपको मोनोलॉग दे रहा हूँ क्योंकि मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ नहीं. और इसके अलावा एक चीज़ याद दिला दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक निवेशक हूं जो आप लोग की सुविधा के लिए ये सब इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है HIV के लिए. तो मैं इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हूं. मैं आपके सब क्वेश्चंस, सब सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आप जो मैं जवाब दे रहा हूँ उसका ध्यान से सुन लीजिए ताकि एक ही सवाल बार बार नहीं पूछी जाए. तो मैं बहुत सारे ज़्यादा सवाल ले सकता हूँ जवाब देने के लिए. हर एक सवाल का जवाब मैं इंग्लिश में पहले दूंगा, फिर उसके बाद हिंदी में दूंगा. सवाल का भी अनुवाद करूंगा तो सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा. ये वीडियो जो है लाइव स्ट्रीम ख़त्म होने के बाद हमारे YouTube चैनल में लाइव टैब के अंदर मिलेगी आपको, तो बाद में भी आप देख सकते हो. Now let me begin a quick summary of key points from the HIV mini-series, latest updates before taking questions. Our immune system consists of innate immune system that we are born with and acquired immunity that we develop as we encounter pathogens. Macrophages are the first to digest pathogens and present the antigen. On the other hand, naive B cells also digest pathogen and present antigen. The role of naive CD4 T cell is to develop receptors using a random splicing method, so they come up with a variety of receptors. When a CD4 T cell encounters a macrophage with an antigen matching the CD4 receptor, it becomes aware and it spawns memory CD4 T cells for future use and CD4 helper T cells.
The helper T cells scout the body for B cells presenting the antigen. Once it encounters a B cell with the antigen, their message to the B cell is to create antibodies for the antigen. At this stage, the B cell matures and produces memory B cells for future use, and plasma B cell to immediately start creating antibodies which will latch on to the antigen and decapitate the pathogen. दोस्तों, हम लोगों ने इनेट इम्यूनिटी के बारे में जानकारी ली और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में जानकारी ली, और हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में मैक्रोफेज होता है जो बाहर से शरीर में आए हुए कीटाणु का नाश करके उसके एंटीजन को अपने शरीर पे पेश करता है। और हमने ये भी जाना कि CD4 टी सेल्स होते हैं शरीर में जो तरह तरह के स्प्लाइसिंग करके तरह तरह के रिसेप्टर्स बनाते हैं। अगर उनका कोई एक रिसेप्टर मैक्रोफेज पर का एंटीजन के साथ मिलता है तो CD4 टी सेल जो है वो मेमोरी टी सेल बनाता है, ये याद रखने के लिए आगे के लिए, और हेल्पर टी सेल बनाता है। और ये हेल्पर टी सेल जो है ये बी सेल को ढूंढते रहता है जो बी सेल के पास वही तरह की एंटीजन हो। जब उसे वो मिल जाए तो उस बी सेल को वो कहता है कि तुम एंटीबॉडीज़ बनाओ। तो वो बी सेल जो है मेमोरी बी सेल्स बनाती है और प्लाज्मा बी सेल बनाती है। मेमोरी बी सेल जो है आगे के लिए याददाश्त रखने के लिए रहती है, और प्लाज्मा बी सेल जो है वो एंटीबॉडी बनाने लगती है। और ये एंटीबॉडीज़ जो है वो कीटाणु को मिलते ही उनके एंटीजन के साथ चिपक जाता है और इस तरह से कीटाणु को दुर्लभ कर देता है, तो ये नाश कर देता है। तो ये है पूरी सिस्टम जिससे हमारी इम्यून सिस्टम काम करती है, और इसी के ज़रिए तरह तरह के ट्रीटमेंट्स मिलते हैं। This is how I understand the immune system and also the importance of each component of the immune system development. We have the first therapy here, which is EBT-101 from Excision Bio. This is a private company. It's not listed in the stock exchange, so they are not obliged to give periodic updates every quarter like listed companies have to do. And therefore, it's difficult to get information from Excision Bio unless they are willing to share it. And they may have their own reasons for not sharing information. This could be legal and business reasons. So it's a very reasonable thing for them to do. EBT-101 is an in vivo gene therapy product intended to excise the replication component proviral HIV from latently infected cells. It will be delivered by an AAV9 vector or adeno-associated virus vector containing a genomic payload of HIV-1 specific CRISPR-Cas9 gRNA editing transgene that is delivered through the transduction of cells. EBT-101 is a single-dose gene therapy product to target the excision of the replication component proviral HIV and remove latent virus that leads to active infection and could lead to functional cure. So basically what excision EBT-101 does, it takes huge chunks of HIV virus and slices them off, thereby decapitating the virus and making it totally ineffective. That's how EBT-101 works. दोस्तों, एक्सिशन बायो जो है उसका EBT-101 थेरेपी है जो इन वाइवो जीन थेरेपी कहलाता है, और ये थेरेपी जो है इसमें CRISPR-Cas9 इस्तेमाल किया जाता है और AAV वायरस जो है एडेनो एसोसिएटेड वायरस उसके ज़रिए शरीर के अंदर इसे डालते हैं, और ये CRISPR-Cas9 जो है वो जाके HIV वायरस के बड़े बड़े टुकड़े काट देता है, तो इस तरह से वो HIV वायरस का वध कर देता है। तो ये है EBT-101। EBT-101 बनाने वाली कंपनी एक्सिजन बायो जो है ये प्राइवेट कंपनी है, तो इनको ज़रूरत नहीं है कि हर क्वार्टर में पब्लिक कंपनी की तरह आके हमें इंफॉर्मेशन दे, और इनका बिजनेस और लीगल कारणों की वजह से ये हमें कोई जवाब नहीं देते जब हम उनको सवाल पूछते हैं इस थेरेपी के बारे में। ये स्वाभाविक है ऐसे कंपनियों में, तो हमें इनका इंतज़ार करना पड़ेगा जब ये हमें अगला सेट ऑफ इंफॉर्मेशन देंगे। Friends, not much information is available about the Tel Aviv vaccine, but what I understand is that they are able to modify B cells to create something similar to broadly neutralizing antibodies or BNABs to cover the HIV virus and therefore prevent it from interacting with our body, with the cells in our body. And their therapy imparts the ability for the B cells to multiply in the vicinity of HIV so that they can spawn more antibodies and or BNABs. This is my broad understanding of how their therapy works, because after June 2022, there has been no information released from the Tel Aviv team
I know that Tel Aviv vaccine is legit because I have seen it on the Israeli government website. So I know that it is legit. They may have their own reasons for not giving any information. I made multiple outreach through email to both the lead researcher and one of the research team members. I tried to reach them through some of my friends in Toronto who have connections in Israel. Nothing has been forthcoming. We'll wait for that information. Again, it's a very promising therapy because BNABs have been speculated to be one of the more potent ways of addressing HIV. दोस्तों ये टेल अवीव वैक्सीन जो है ये बी सेल को इस्तेमाल करता है. उन्होंने बी सेल को जेनेटिकली इंजीनियर किया है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज़ करके, जिससे कि वो बी सेल जब HIV कीटाणु के पास आता है शरीर में तो बी सेल उसकी कॉपीज़ खुद की कॉपीज़ बनाने लगता, और जब बी सेल्स अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना ले तो हर एक कॉपी से एंटीबॉडीज़ आएगी. और ये एंटीबॉडीज़ जो है इसके ख़ास तरह की एंटीबॉडी है जिसको ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कह सकते हैं. और वो जो है एंटीबॉडी HIV को चारों तरफ से जाके उसके ऊपर चिपक जाता है. तो समझ लीजिए जिस तरह से कि HIV के ऊपर उसने एक कवर लगा दिया, और उस कवर के वजह से HIV जो है हमारे शरीर के किसी भी सेल के अंदर जा नहीं सकता. तो इस तरह से टेल अवीव वैक्सीन काम करता है. ये मुझे उनकी जो लिटरेचर है वो पढ़कर मुझे ऐसे समझ में आया है. मैंने काफ़ी कोशिश की है टेल अवीव वैक्सीन वालों से इंटरव्यू मांगने के लिए और इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए. जून 2022 के बाद इनका कोई भी प्रेस रिलीज़ नहीं है. मैं जानता हूं कि टेल अवीव वैक्सीन जो है ये एकदम लीगल लेजिट वैक्सीन है, क्योंकि इजरायली गवर्नमेंट के वेबसाइट में मैंने इसके बारे में डिटेल देखा है. तो गवर्नमेंट के वेबसाइट में अगर इसके बारे में डिटेल्स आए तो सच ही होगा. तो हम इंतज़ार करेंगे इनका कि ये हमें आके कुछ जवाब दे, और जब भी वो हमें जवाब देंगे हम आपके पास ले आएंगे. मेरे दोस्त हैं यहाँ पर जिनका इज़राइल में कांटेक्ट है, उनके द्वारा भी मैंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला टेल अवीव टीम से. तो देखते हैं, हम उसकी ध्यान रखेंगे कि उनके पास अगर कोई जवाब आए तो तुरंत आपके पास पहुँचा दे. फाइनली माई फ्रेंड्स, वी हैव AGT 103-T, which I think will be the most successful of the therapies. I am saying this after reading the lessons learned from the failure of Mosaic vaccine, which I made a video of recently. If CD4 is the target of HIV and HIV keeps mutating and hiding, then it is logical to put a shield around CD4, because we know CD4 very well and CD4 is stable. We know its entire life cycle of the CD4, where it's created and how it grows. So we can protect CD4 and thereby prevent HIV from continuing its life cycle. So this is the reason why I think AGT 103-T will be a very good functional cure. And AGT 103-T is going to be a functional cure only because of the ability of HIV to go dormant and hide in various body parts like the brain and other places, and come back when the antiretroviral therapy is out. Here I would like to point out another reason why I'm thinking AGT 103-T will be successful. That is because another news came up very recently about the Dusseldorf patient who is the third to be rid of HIV. This is a brand new news. This came in just 5 days ago. I'll be making a separate video about it, so you can wait for that. Basically, what has happened is that just like the earlier two cases where the patients had terminal illness requiring a bone marrow transplant, and the bone marrow given to them had the CCR5 mutation, which means that it produces CD4 cells without the CCR5 gene. So AGT engineers CD4 T cells to lose the CCR5 door handle that HIV uses to enter the CD4 T cell, and additionally AGT 103-T installs a short interrupting RNA inside the CD4 T cell, so that even if a HIV strain manages to break through into the CD4 T cell without using CCR5, its replication can be interrupted. And the third patient, as I mentioned, the Dusseldorf patient, also had the same situation where he had a terminal illness which could be cured with a bone marrow transplant. And the transplant they did was done with a CCR5 mutation, and he has recovered from HIV.
But as you would have heard Jeff Galvin, CEO of AGT, tell in his interview to us that this is a very extreme measure. First of all, bone marrow matching is a big problem, and CCR5 mutation is found basically in Caucasian genes. Caucasian genome. So that's another factor. So it's all limiting the availability of such transplant candidates. So these are all very rare. And again, it's a very difficult procedure, and therefore only when life depends on a bone marrow transplant do surgeons do those kind of transplants. So this is not going to be a go-to solution for HIV patients. And besides, CCR5 mutation can only block a particular set of strains of HIV, which uses the CCR5 genes. There are a few genes, strains of HIV which do not need the CCR5 gene as a door handle to get into CD4. They can still percolate. Let me explain this in Hindi to our Indian friends before I proceed further. दोस्तों, ये AGT 103-T थेरेपी जो है वो मेरे हिसाब से सबसे कामयाब रहेगी. मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि मोज़ाइक वैक्सीन का फेलियर में हमने यही सीखा कि CD4 टी सेल को बचाना बहुत ज़रूरी होता है. और अगर CD4 टी सेल ही HIV का टारगेट है और CD4 टी सेल में घुसने के बगैर HIV अपनी प्रक्रिया जारी नहीं रख सकता, तो सोचने वाली बात यह है कि हमें CD4 को बचाना चाहिए. अगर CD4 को हमने कवच पहना दिया और उसे बचा दिया तो HIV उसके अंदर जा नहीं सकता, और HIV अगर उसके अंदर नहीं जा सकता तो बाहर रहते रहते कभी ना कभी तो HIV खुद का नाश कर लेगा. तो इस तरह से AGT 103 सफलता के लिए बहुत ही HIV को मारने की सफलता में इसको बहुत ज़्यादा चांसेस है. माफ़ करिएगा, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि AGT 103-T सबसे इफ़ेक्टिव थेरेपी रह सकता है. और दूसरा कारण ये है क्योंकि अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले नई खबर आई कि एक तीसरा HIV पेशेंट है जो उसको कंप्लीट रिलीफ मिल गई है HIV से. उसे डसेल्डॉर्फ पेशेंट कहते हैं. इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊँगा कुछ ही दिनों में, शायद अगले फ्राइडे मैं आपको वीडियो ले आऊँगा. डसेल्डॉर्फ पेशेंट का भी यही हाल था. उसे एक तरह की कैंसर थी जिसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, और उसके लिए जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट उन्होंने किया, उन्होंने CCR5 म्यूटेशन वाली बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, और उस बोन मैरो में से जो भी CD4 टी सेल बनती है उसमें CCR5 जीन नहीं होती. तो इसके वजह से वो क्योर हो गया. लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरह से क्योर हो सकते तो क्यों ना हर एक HIV पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दे. डॉक्टर लोग ये कहते हैं, और जेफ गैल्विन जो है अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी वाले, उन्होंने भी यही बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट सिर्फ तब की जाती जब पेशेंट की ज़िंदगी उस ट्रांसप्लांट पे निर्भर हो, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर है और शरीर के लिए बहुत दुखदायक या तकलीफ़दायक प्रोसीजर है. इसलिए एकदम लास्ट अपॉर्चुनिटी या लास्ट मेथड की तरह से यूज़ करते हैं. और दूसरी बात यह है कि एक तो बोन मैरो मैच होना चाहिए आपके लिए, और दूसरी बात उसके अंदर CCR5 म्यूटेशन होनी चाहिए. CCR5 म्यूटेशन सिर्फ कॉकेशियन जीनोम में मिलती है, तो इसकी वजह से और भी कम हो जाता है इसकी अवेलेबिलिटी. तो इसकी वजह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट सबके लिए इलाज नहीं बन सकता. तो मेरे हिसाब से AGT 103-T जो है ये सबसे कामयाब रहेगी. एंड फ्रेंड्स, आई थिंक the AGT 103 therapy will soon enter into phase 2 clinical trials. I have been in touch with them, and they are a very proactive company. They are very transparent with all their information, and they have mentioned that they are in the process of dotting the I's and crossing the T's on all the data that is collected from phase 1. And then they are also trying to put all the plans together for what is the strategy for doing phase 2 and make the package ready for submission to the FDA somewhere around the April-May timeframe. After which I think they would be able to give us some time and come back and chat with us and give us some heads up on what to expect and what kind of ATS we can look at. So we need to give them some space, because
their job is to create this cure. It's not to come and give us interviews. So we have to be mindful of their bandwidth and their focus and let them do their job. But unlike the other two companies, AGT definitely communicates with us, and I'm very confident that they'll give us information as and when it is available for distribution. So with that said, let me translate this to Hindi for our Indian friends. दोस्तों, AGT 103-T के बारे में अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी हमें लगातार संपर्क में है, और उन्होंने कहा है कि वो फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल की सब जो डेटा उन्होंने जमा की है उसको अच्छी तरह से टेबल में डालकर उसको प्रेजेंटेशन करके अच्छी तरह से मैथमेटिक्स सब करके गणित करके सब देख रहे हैं कि अच्छी तरह से प्रेजेंट करें FDA को। उसके साथ साथ उन लोग ये भी बताना चाहते हैं कि वो किस तरह से वो फेज़ 2 इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, कितने पेशेंट्स होंगे, उनको उनमें से कितने लोगों को असली AGT 103-T दिया जाएगा, क्या डोज दिया जाएगा, और कितने लोगों को नकली डोज दिया जाएगा जिसके अंदर AGT 103 नहीं होगी, और किस तरह से कंपैरिजन की जाएगी, वो सब बताने के लिए वो प्लान कर रहे हैं। वो प्लान तैयार होने के बाद फेज़ 1 का डेटा और फेज़ 2 प्लान दोनों मिला के वो FDA को अप्रैल मई के टाइम फ्रेम में देने वाले, और उसके बाद वो हमारे सतह के चैनल में बात करेंगे। तो ये खबर है हमारे पास अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी के पास से। एंड फ्रेंड्स, देयर इज another technology that's being used to create vaccines, and it's a very interesting technology. I would rather call this another tool that is being used to create vaccines these days. A more successful and popular example of that is the mRNA vaccine used to combat COVID. So the cell contains DNA in its nucleus. When the cell experiences certain stimulus, it will request the DNA to create specific protein based on the stimulus that it receives or the stress it faces. The DNA looks up its chromosomes and makes a copy of the requisite gene that can create the protein. This copy is called mRNA. So it throws out the mRNA, and once the mRNA comes out of the nucleus and into the cell, ribosomal RNA transcribes it and creates the protein. So in theory, antibodies can be created using mRNA. Also, some genetic defects that prevent production of certain proteins can in theory be resolved by mRNA therapy, and that idea is a concept for a separate video which we'll talk about later on. That's a topic for another day, and for the genomic investors interested in that technology from an investment perspective. The reason I bring up mRNA is because there are 3 mRNA vaccines for HIV in clinical trials, and we'll get the result of these 3 within 2023. One of them is coming as early as, I think, June, and the other 2 will be in before December. So let me explain this to our Hindi audiences. दोस्तों, हमारे शरीर में जो सेल्स है, अगर उस सेल को किसी तरह की का सदमा या ठेस पहुंचा, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें DNA है, तो सेल DNA को कहेगा कि भाई हमें इस तरह का सदमा पहुंचा है, इसलिए हमें इस तरह की प्रोटीन चाहिए। तो DNA खुद के अंदर तलाश करता है और सही जीन निकालता है जो प्रोटीन बना सकता, और उस जीन को जीन की एक कॉपी बना के न्यूक्लियस के बाहर फेंकता है। तो जब वो जीन की कॉपी न्यूक्लियस से बाहर आती है उसे हम mRNA कहते हैं। राइबोसोमल RNA जो है सेल के अंदर है, वो mRNA को पढ़कर उसे प्रोटीन बना देता है, और उस प्रोटीन की वजह से सेल को राहत मिलती है, उसे जो भी ठेस पहुंची हो उससे। सो थियरी में देखा जाए तो हम लोग mRNA यूज़ करके एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं। इसका मतलब है mRNA यूज़ करके वैक्सीन कर सकते हैं। जैसे कोविड वैक्सीन जो बने हैं वो सब mRNA वैक्सीन्स हैं। उसमें कोविड कीटाणु की जो एंटीबॉडी है वो प्रोटीन mRNA के ज़रिए बनाया जाता है, तो उस तरह से mRNA वैक्सीन बनती है। और mRNA वैक्सीन यूज़ करके शरीर में अगर कोई प्रोटीन की कमी हो तो वो शरीर को बनाने को कह सकते हैं। तो इसलिए इस तरह से mRNA का इस्तेमाल जेनेटिक डिफेक्ट्स, कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स के इलाज में किया जा सकता है। इसके बारे में जो हमारे जीनोमिक निवेशक है उनके लिए इंग्लिश में मैं वीडियो बनाऊँगा सेपरेटली। तो उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने mRNA के बारे में बात इसलिए छेड़ी क्योंकि 3 mRNA वैक्सीन है HIV के लिए जो अभी फ़िलहाल क्लिनिकल ट्रायल्स में है, और इसकी रिज़ल्ट्स जो है हमें 2023 यानी कि इस साल के अंदर मिलेगी, और सबसे पहला रिज़ल्ट जो आने वाला है मेरे ख्याल से मई तक आ जाएगा। तो हम इसके बारे में समाचार आपको ले आएंगे, तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ।
And friends, finally, I want to talk about the fact that we will have some communication from American Gene Technologies, potentially in the May to June timeframe. And before that, if they are able to come and talk to us generally about HIV, I'm having chats with them, and maybe they may oblige me, and we'll have a Q&A session, not about AGT 103, but HIV in general, to understand the disease and to understand the therapies, the strategies that various therapies use in general, not talking about anything specific. I can't promise about that, but I'm making my efforts to make that happen. With that said, I'm going to turn around to have a look at questions and answers, if any, and I hope I have some audience out here. Okay, guys, let me see if there is anyone on the stream. Okay. Okay, guys. So let me get into, yeah, now I'm able to see everything here. Oh, Inf, thank you for being here. It seems that it's just a few people out there, but they are not asking any questions. It's not American Gene Technologies, it's Gene Technology, Gene. Anyway, guys, I think thanks to the 8 people who are in this live chat, and special thanks to Inf for supporting this channel always and being here to give me company. It gets lonely, that's why I don't do live streams very often. But hopefully many people will come and have a look at the live stream here once it is scanned, post fact. So that's about it, friends. And Inf, I think the others are just silent spectators. They may not be our channel members. They're just curious and they are just passing by and they thought they will stop and look at it. Yeah, it's a nice camera. It's my original camera. It's on top of my computer. Yeah. Okay, guys. So I'm going to turn off the live stream. Thanks to everyone who came in, the 8 people who came in, including Inf. And I'll catch up with you again later. Bye for now.